Hello, good evening, student. Good evening, hello. So today I am here with the new chapter, which is nothing but Introduction to Trigonometry. So this is a very much important chapter for boards as well as जो भी आप 11th 12th में पढ़ोगे इस सबका बेसिक रहने वाला है ये आपका ट्रिग्नोमेट्री। आपने कई बार सुना भी होगा ट्रिगो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट रहता है ये रहता है एंड ऑल अदर थिंग बट दिस इज नॉट ट्रू। अगर आपके सारे बेसिक्स क्लियर है जो भी हम बोलेंगे सपोज इफ वी आर टॉकिंग अबाउट साइन या फिर कॉस जो क्वेश्चन आप बोलोगे अगर वो क्वेश्चन का आंसर वो क्वेश्चन के लिए जो फॉर्मूला आपको यूज करना चाहिए वो अगर झट से क्लिक होता है देन यू विल बी मास्टर विद दिस ट्रिगो ठीक है। So today we start with this chapter trigonometry in which आपको कुछ ratio trigonometry word आपको मिल रहा है what is exactly meaning of this word and ये word कैसे form हुआ है। So as you can see there is a tree right try then you can see the next one so try usually trigger for tree correct but try then next one is gone which is for size. Try is nothing but trigona is nothing but size, and metry is nothing but distance. And the metron stands for measure. जो भी आपके पास triangle के three sides रहते हैं, we'll just talk about. We just have to deal with those three sides angles of the triangle. Okay. So based on this trigonometron, which is nothing but आपको जो भी measures consider करने हैं वो triangle के बारे में जिसके three sides रहते हैं three angles रहते हैं we'll just talk about it. Okay. So first thing is that ये अच्छे से याद रखो अभी that we have a right angle triangle. Right angle triangle is nothing but आपको ऐसा triangle find out करना है जिसमें आपको कोई एक angle मिल रहा है 90 डिग्री राइट जो भी 90 डिग्री के अपोजिट साइड रहेगा the side which is opposite to the 90 degree is known as a hypotenuse. Hypotenuse is nothing but side opposite to the 90 degree. Then, if this is the case, now we'll talk about angle x. Measure of angle x के लिए obviously आपका 90 डिग्री हमेशा सेम रहने वाला है. So just because of that, जो भी opposite side आपको मिलेगी वो भी हमेशा रहने वाली है. जो भी आपके चेंजेस रहेंगे विद रिस्पेक्ट टू आप जिस एंगल के बारे में बोल रहे हैं वो वाला एंगल. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एंगल x. सो एंगल x के लिए जो अपोजिट साइड रहेगा इट विल बी y for measure of angle x opposite side will be yz and adjacent side which is nothing but जिस एंगल के बारे में आप बोल रहे हो उसकी एक साइड तो आपकी रहेगी हाइपोटेन्यूज जो भी adjacent side रहेगी राइट ओके so this xy will be adjacent side yz will be opposite side and xy will be adjacent side for the angle x. Similarly we just have to comment for the measure of angle z. Okay, so for z, what will be the opposite side? Opposite side will be xy and adjacent side. So z के लिए जो भी two sides आपको मिल रहे हैं, obviously one of these will be hypotenuse. तो वो छोड़ के जो side आपको मिल रहा है, it will be adjacent side for measure of angle z. ये समझ में आ रहा है? हम जितने भी formulas, जितने भी ratios देखने वाले हैं, all those ratios are based on this opposite and adjacent वाला केस. तो अच्छे से ये समझ में आना चाहिए hypotenuse is nothing but side opposite to 90 degree. जिस भी एंगल के बारे में आप बोलोगे उसके लिए अपोजिट वाला एंड हाइपोटेन्यूज छोड़ के जो भी अनदर एडजेसेंट साइड मिलती है उसके बारे में आप डिस्कस करोगे ठीक है। ये हो गया फिर 90 डिग्री का. सो विल जस्ट टॉक अबाउट द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. अगेन वी कंसीडर right angle triangle ABC where P will be 90 degree. So what will be hypotenuse for it? It will be AC, correct? Hypotenuse for this angle will be AC. We'll just talk about measure of angle A and we'll denote
that angle by theta. ठीक है? So suppose this will be angle theta. थीटा के लिए अपोजिट, थीटा के लिए अपोजिट रहेगा आपका BC, करेक्ट? थीटा के लिए अपोजिट रहेगा आपका BC. देन थीटा के लिए आप एडजेसेंट साइड कौन सी कंसीडर करोगे? थीटा के लिए एडजेसेंट साइड आपकी मिलेगी व्हिच इज नथिंग बट AB. इफ दिस इज द केस, देखो हम राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बोल रहे थे, वी आर जस्ट कमेंटिंग फॉर द एंगल थीटा. सो फॉर दैट अपोजिट विल बी BC and adjacent will be AB. If this is the case, then sin theta हम सबसे पहले देख रहे हैं, इसके लिए पूरा SINE कंसीडर करेंगे. अदरवाइज होल चैप्टर हम जस्ट SIN इतना ही यूज करने वाले. So sin theta given as opposite upon hypotenuse. Opposite upon hypotenuse. Then with this समझ में आ रहा है जो हम देखने वाले हैं sin. Similarly, cosine theta is given as adjacent upon hypotenuse. Cosine theta is given as adjacent upon hypotenuse. And usually हम इसे बोलेंगे सिर्फ cos theta. Cos theta is given as adjacent upon hypotenuse. And the next one is tangent theta. Tangent theta is given as opposite side divided by adjacent side. जैसे हमने साइन के लिए कोसाइन के लिए सिर्फ शॉर्टकट देखा है, सिमिलरली for this we'll just consider tan theta. Tan theta is given as opposite side upon adjacent. आपको ये याद रखना है, साइन के लिए कुछ आपको O upon H का कैसे रहेगा, cos के लिए आपको A upon H का इस कंसीडर करना है, and tan is nothing but OP. साइन मतलब OH, cos मतलब H and tan मतलब OH, that is opposite upon adjacent side. समझ में आ रही है? So for sin theta is nothing but opposite upon hypotenuse. If this is the case, ये अगर आपका sin theta का वैल्यू रहेगा, then cos is nothing but you just have to consider reciprocal of this. मतलब इस केस में आप opposite upon hypotenuse बोल रहे थे, हम अभी बोलेंगे hypotenuse upon opposite side. Hypotenuse upon opposite side. This will be the value for cosec theta. Cosec theta is nothing but inverse of side. आपको सिर्फ ये वाले याद रखने, एक बार ये याद रखिए तो ये इजीली हो जाए. Cosec समझ में आ गया. Next one will be secant. जैसे आपने cosec के लिए साइन का रेसिप्रोकल कंसीडर किया है, वैसे ही secant theta is nothing but reciprocal of cos, which is given as hypotenuse upon adjacent side. Hypotenuse upon adjacent side. This will be the value for sec theta. And the last one, जैसे ये रेसिप्रोकल इसका रेसिप्रोकल, सिमिलरली tan के लिए जो भी आपके वैल्यू रहते हैं उसका अगर आप रेसिप्रोकल कंसीडर करोगे, it will be a cotangent theta, which is given as adjacent side upon hypotenuse. Adjacent side upon hypotenuse. Usually आप इसके लिए याद रखते हो value of cot theta. Cot theta is given as adjacent upon hypotenuse. Then up to this, ये समझ में आ रहा है? कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, cos का रेसिप्रोकल cosec रहेगा कि sec रहेगा, तो ये चीज याद है. cos के लिए लास्ट आपको क्या मिल रहा है, cos is ending with s, तो आपको ये वर्ड याद रखना है जो s से स्टार्ट होता है. cos and sec will be opposite of each other. sin and cosec will be reciprocals of each other. तो आपको sin के लिए OH sin OH sin OH याद आ रहा है, cos के लिए cos AH cos AH cos AH, and sin upon cos, which will be opposite side upon adjacent, will be the value for tan theta. ये आपको अच्छे से याद रखना है. अगर आपको चाहिए you can take a screenshot of it. Yes, please do it so it will be easier for you. Done with this? Should we move on for the next concept? See, here we have the very first question. In triangle ABC, right angle at B. AB is given as a 24,
BC is given as a 7, then determine the value for sin A, cos A, sin C and cos A. जब भी आपको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बोलना है सबसे पहले रफ डायग्राम बना लो सो दैट आपको वो एंगल समझ में आ जाएगा। एक बार अगर 90 डिग्री मिलता है तो 90 का अपोजिट वाला केस हाइपोटेनस कौन सा मेंशन करना है ये क्लियर हो जाता है। अगर आप ए के बारे में बोल रहे तो ए के लिए अपोजिट कौन सा रहेगा, ए के लिए एडजेसेंट कौन सा रहेगा, ये आपको झट से क्लिक होता है। ठीक है, सो व्हेनेवर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विद देयर सबसे पहले आपको जस्ट एक रफ डायग्राम बनाना है। ओके, सो हियर we have this diagram ABC, right angle at B. Then what are the given cases? AB is given as a 24. AB will be 24. BC is given as a 7 centimeter. Right? 90 के लिए जो opposite रहेगा it will be your hypotenuse. But hypotenuse की वैल्यू आपको given नहीं है. But आप प्रूव कर सकते हो. आपको 90 डिग्री वाला एंगल मिल रहा है। जब भी राइट एंगल ट्रायंगल का केस आएगा आप पाइथागोरस का यूज कर सकते हैं। सो पाइथागोरस थ्योरम स्टेट्स दैट hypotenuse square equals to square of first side plus square of second side, right? Okay, done with this. Hence for this triangle, in the triangle ABC, B is a 90 degree, therefore hypotenuse बन जाएगा अपना AC square. Using Pythagoras theorem, we can say that AC square equals to AB square plus BC square. जो वैल्यू पता नहीं है वो हम एज इट इज रखते हैं, बट वी नो द वैल्यूज ऑफ AB and BC which are 24 and 7 respectively. Hence, AC square will be 24 square plus 7 square, that is 576 plus 49 which is equal to 625. So AC square का अगर वैल्यू 625 रहेगा, then what will be value of AC? Just आपको square root consider करना है. So AC will be 25 centimeter. अब आपको सारे वैल्यूज पता है सो दैट आप इजीली वो रेशियो के बारे में बोल सकते। ये समझ में आ रहा है? We have this right angle triangle with sides 7, 24 and hypotenuse will be 25 centimeter. So now we have to find the value of sin A. But sin के लिए आपने याद क्या रखा था? Sin is nothing but OH वाला केस. O stands for opposite, H stands for hypotenuse. Hence, sin A will be opposite upon hypotenuse, that is BC upon AC. But what is the value of BC? This is nothing but 7 centimeter and AC will be 25 centimeter. Done with this, समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है पूरा? जैसे आपने sin A का वैल्यू फाइंड आउट किया, सिमिलरली cos A के लिए बोलो, cos A is nothing but adjacent upon hypotenuse. Cos के लिए आपने AH याद रखा है, so adjacent will be AB, hypotenuse will be AC, hence cos A will be 24 upon 25. ये जो रेशियोज है आपको एज इट इज एज अ फ्रैक्शनल वैल्यू ही करना है, ये अगेन सिंपलीफाई करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, बट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? ये जो आपने लिखा है OH या फिर AH करके। ठीक है, नेक्स्ट आपको फाइंड आउट करना था व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ sin C। तो अब हम शिफ्ट हो जाएंगे C के लिए। sin is nothing but OH, but C के लिए अपोजिट कौन सा मिलेगा आपका? 24. Hypotenuse will be same, which is nothing but 25. Hence sin C will be 24 upon 25. Similarly, cos C के लिए आपको क्या करना है? Adjacent upon hypotenuse. So adjacent will be BC, BC upon AC, जिसके वैल्यूज आपको मिल जाएंगे 7 upon 25. क्लियर विथ दिस? आपको करना क्या था? साइन के लिए O अपॉन H, कॉस के लिए A अपॉन H, दैट्स इट। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल अगर आपके पास रहता है तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए सबसे पहले अगर कोई साइड आपको पता नहीं है तो वो फाइंड आउट करो, हेंस इजीली आप आगे वाला सब कुछ कर सकते हो। गर्ल्स, ओके, सी ऑलवेज रिमेंबर दैट जब भी आपको कंसीडर करना है साइन का केस तो फिर आपको मिल जाएगा अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। प्लीज जो भी फर्स्ट पार्ट है ना इस वीडियो का वो रेफर करो so that you will easily get to know about this. Okay pupils, fine. फर्स्ट पार्ट देखो समझ में आ जाएगा, अदरवाइज जब नेक्स्ट हम ये एग्जांपल देखने वाले उससे भी क्लियर हो जाएगा। सी नाउ इन द गिवन फिगर
find tan P minus cot R. Okay. Again, we have a right angle triangle in which one of the value is unknown to us. तो सबसे पहले आपको ये वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी. बट अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट राइट एंगल ट्रायंगल. राइट एंगल आएगा मतलब आप पाइथागोरस का यूज कर सकते हो. झट से मुझे बोलो क्यू आर का आंसर क्या रहेगा आपका. क्यू आर इज नथिंग बट हाइपोटेन्यूस square equals to first side square plus second side square, right? So QR square is nothing but 13 square minus 12 square. ऐसा आपको करना होगा. ये समझ में आ रहा है सबसे पहले. देन एक बार अगर ये पाइथागोरस का यूज करके आप अननोन वैल्यू फाइंड आउट करोगे उसके बाद सिर्फ आपको रेशियोज का यूज करना. दैट्स सी we have this 90 degree. 90 degree के opposite जो रहेगा it will be hypotenuse. Using Pythagoras theorem we can say that PR square equals to PQ square plus QR square. PR square equals to PQ square plus QR square. Hence, PR square will be 13. PR square will be 13 plus 12 square plus QR square. But आपको अभी QR square भी find out करना था. So 169 minus 144 will be QR square. That is QR square will be 25. Hence, we can say that QR will be positive square root of 25, which will be 5 centimeter. Done with this, it means that now you have a right angle triangle in which तीनों भी sides आपको पता है. अब आपको चेक करना था tan का केस जो हमने इस लेक्चर के फर्स्ट या फिर सेकंड स्लाइड पे देखा है, which is nothing but all the trigonometric ratios. हमने sin का देखा था, cos का देखा था, tan का देखा था, राइट. देन sin के लिए इनवर्स का केस, cos के लिए इनवर्स का केस, tan के लिए इनवर्स का केस. देन अप टू दिस. सो सिमिलरली अगर आपको tan चाहिए तो आपने याद क्या रखा था, ओ ए ओ ए ओ ए ओ ए, करेक्ट. ओ एच रहता है साइन के लिए, करेक्ट. ए एच रहेगा कॉस के लिए. सिमिलरली tan के लिए आपको याद रखना है ओ ए ओ ए ओ बी, which is nothing but opposite and A stands for adjacent. So P तो आपको मिल रहा है. P के लिए opposite side आपका कौन सा रहेगा? P के लिए opposite side रहेगा आपका QR. Hence our numerator will be QR divided by OA. So adjacent side. Hypotenuse छोड़ के जो बच जाता है, जो remaining side आपका रहता है, it will be your adjacent side, right? Hence for this P, adjacent side will be PQ. So I will write tan P as the QR upon PR. But we know that QR is nothing but 5 and PQ is nothing but 12. Hence, tan P will be 5 upon 12. समझ में आया? आपको सिर्फ वो रेशियो याद रखने हैं. बेस्ड ऑन दैट रेशियोज आपको ये वैल्यूज इधर पुट करने हैं. नेक्स्ट आपको चाहिए कुछ कॉट आर. बट वी नो दैट कॉट is nothing but reciprocal of tan, right? देखो sin के लिए reciprocal रहेगा cosec, cos के लिए reciprocal रहेगा sec and tan के लिए आपका reciprocal बन जाएगा cot. reciprocal है मतलब उल्टा पुल्टा. जो tan के लिए आप ओ ए कंसीडर करने वाले थे वही cot के लिए आपको क्या कंसीडर करना पड़ेगा, a upon. बट नाउ आपको r के बारे में चाहिए. सो वी हैव दिस एंगल r. कॉट के बारे में अगर बोलोगे देन a अपॉन o मतलब एडजेसेंट डिवाइडेड बाय अपोजिट साइड. हेंस फॉर दिस एंगल r adjacent side will be QR and opposite side will be PQ. एक बार ये सारे रेशियोज आप समझ सकते हो. मतलब अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट क्या है, तो फिर ये आप इजीली कर सकते. सी नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कॉट आर. जो क्यू आर आपको वैल्यू मिलेगा, क्यू आर इज नथिंग बट 5 एंड पी क्यू इज नथिंग बट 12. बट आपको फाइंड आउट करना था tan p minus cot r. Hence I will write here tan p minus cot r will be tan p is nothing but 5 upon 12 minus cot r is nothing but 5 upon 12. So what will be its answer? 5 by 12 minus 5 by 12. Hence answer will be 0. Then up to this, ये clear हो रहा है आपको? If you want to take a screenshot, take.
Okay. Should we move on for the next one? So here we have the next question. See, अभी आपको सिर्फ कोई एक रेशियो उन्होंने दिया है which is nothing but sec theta. If sec theta is equal to 13 upon 12, then calculate all other trigonometric ratios. मतलब इस केस में तो आपके पास अभी कुछ ट्रायंगल भी नहीं है और मैंने आपको क्या बोला है अगर फर्स्ट मतलब जो भी आप ये सारे बेसिक्स देख रहे हैं सबसे पहले रफ डायग्राम बनाने की कोशिश करो so that you will easily get it. आपको find out करना है. Hence, we just consider a right angle triangle with right angle at B and suppose measure of angle A will be theta. Then up to this. So given part क्या है देखो आपको ये बोला गया था sec theta is 13 upon 12. But you know that sec is nothing but reciprocal of cos. हमने क्या देखा था cos ये वर्ड आपका end होता है s पे and sec start होता है s पे करेक्ट. Hence cos के लिए का reciprocal बनता है sec theta. So we can say that given part is sec theta equals to 13 upon 12. But we know that if we are talking about any angle जिसका आपको sec रेशो क्या रहेगा वो चेक करना है तो आप क्या करोगे sec is nothing but sec is a reciprocal of cos. cos के लिए आपने a h याद रखा था तो फिर sec आपका बन जाएगा ht. That is hypotenuse divided by adjacent side. Hypotenuse divided by adjacent side. So just comparing these two words, we can say that comparing equation 1 and equation 2, we can say that LHS itself. Hence we will compare the LHS one. So AC upon AB will be 13 upon 12. Right? Then with this, so suppose आप ये consider करोगे that आपको तो सिर्फ ratio मिल रहा है ना. We cannot say that AB will be 12 or AC will be 13 because we have in the ratio form. So we just consider a non-zero common multiple k so that we can say AC equals to 13k and AB will be 12k. आपको ये पता है कि ये सब करने के बाद अगेन आपको रेशियो भी कंसिडर करना है तो k अपॉन k तो हो जाएगा आपका कैंसिल. बट ये साइड समझने थे इसके लिए हमने कंसीडर किया ठीक है. सो विल जस्ट कंसीडर अ नॉन जीरो कॉमन मल्टीपल के सच दैट A will be 13k and AB will be 12k. So now we have a right angle triangle in which hypotenuse is known to us. One of the side is known to us. We just have to find the BC. So for that, what can we use in the right angle triangle ABC? Right angled at B. Hence hypotenuse will be opposite side of B, which is nothing but AC. AC square equals to AB square plus BC square. That is 13k whole bracket square. Answer will be 169 times k minus 144 times k square equals to bc square. K square अगर आप कॉमन कंसीडर करोगे then bc square will be 25k square. But we have to consider only the value for bc. So you just have to consider positive square root of bc. Hence we can say that bc will be 5 times k. bc will be 5 times k. तो ये भी मिल गया आपको bc हो जाएगा अभी आपका 5. So now we have a right angle triangle in which तीनों भी साइड आपको नोन है. थीटा कौन सा ये आपको पता है सिर्फ रेशियो के बारे में बोलना है. All trigonometric ratios find out करने थे. So we know that if we are talking about sin theta, sin मतलब आपने याद रखा है OH, that is opposite side upon hypotenuse. So BC upon AC. Sin theta will be 5k upon 13k, but k will get cancelled and we can say that sin theta will be 5 upon 30. Then with this समझ में आ रही है. नेक्स्ट पार्ट रहेगा आपका cos थीटा के लिए. चाहे तो आप ये भी यूज कर सकते हो sec theta and cos theta are just reciprocals of each other. So if sec theta is 13 upon 12, then cos theta will be reciprocal of it, which will be 12 upon 30. या फिर ये चेक करो theta cos theta is nothing but AH, that is adjacent side upon hypotenuse, so its answer will be 12k upon 30k, which can be written as 12 upon 30. Right? Similarly, now we'll just check what gives the value for tan theta. Tan के लिए आपने क्या याद रखा?
Tan is nothing but OA, 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 right? So OA stands for A is nothing but opposite one. A is nothing but adjacent one. Hence, we can say that tan theta will be opposite is 5k divided by adjacent is 12k. Kk will get cancelled. Hence, tan theta will be 5 upon 12. Similarly, you will get the values of cosec. Cosec के लिए आप क्या करते हो? जो साइन के लिए करोगे, साइन के लिए आपने O अपॉन H किया था, कोसेक के लिए जस्ट उसका ही उल्टा उल्टा. दैट इज अगर ये BC अपॉन AC रहता है तो कोसेक के लिए आप कंसीडर करोगे AC अपॉन BC. Hence its answer will be 13 upon 5, right? Right? So the next part is the sin हुआ, cos हुआ, tan हुआ, cosec हुआ, sec तो given था. So the only last part is cot, and cot के लिए आप याद क्या रखते हो? A upon O. So adjacent upon opposite. That is AB upon BC. What will be value of AB? It will be 12k and this will be 5k. So kk will get cancelled. Hence cot theta will be 12 upon 5. You have to give a screenshot. Just go through it. Okay. Should you move on for the next one? Here it is. Given that 15 times cot A is equal to A, then find sin A and sec A. कर सकते हो क्या आप देखो, जैसे पिछले बार में आपको sec थीटा का सिर्फ वैल्यू दिया था बेस्ड ऑन दैट हमने ये सब कुछ किया, बट अभी तो आपके पास सिर्फ 15 टाइम्स cot A is equal to 8 ऐसा कुछ है. सो जस्ट यूजिंग दिस, अगर 15 टाइम्स cot A आपको मिलता है 8, then what will be value of cot A? It is nothing but 8 upon 15. But we know that if we are talking about cot A, cot is nothing but A upon O, that is adjacent upon hypotenuse, which will be AB upon BC, can be written as 8 upon 15, can be written as 8 upon 15, right? सो जैसे आपने फर्स्ट प्रीवियस में किया था, आपके पास कुछ रेशियो वाला मिल रहा है. अगर आपके पास ऐसा रेशियो रहता है तो फिर आप कंसीडर करोगे कुछ नॉन कॉमन मल्टीपल के, सच दैट आप ये बोल सकते हो AB will be 8 times K and BC will be 15 times K. I think अभी आप AC का वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हो. We have a right angle triangle जिसमें hypotenuse square is equal to first side square plus second side square, that is AC equals to AB square plus BC square, which will be AC square can be written as 16 times K square plus 225 times K square. Hence the answer will be, total will be 289, but we know that 289 is a square of 17, right? So AC can be written as 17 upon K. दिस इज द केस. तो सिर्फ आपको रेशियो का यूज करना है. साइन ए इज नथिंग बट ओ एच अपोजिट अपॉन hypotenuse, that is BC upon AC. Hence sin A will be 15k upon 17k, so that k will get cancelled and sin A will be only 15 upon 17. Similarly, can you solve for the sec A? sec के लिए आप क्या करोगे? sec is nothing but h upon a, right? Hence hypotenuse upon adjacent side, that is AC upon AB. but AC की वैल्यू तो आपकी है 17k, AB तो आपको given था as a 8k, so that k will get cancelled and sec A can be written as 17 upon 8. कर सकते हो, ये समझ में आ रहा है? हम क्या कर रहे हैं, जितना भी कुछ आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल रहेंगे, सबसे पहले आपको अच्छे से ये याद रखना है दैट व्हाट विल बी दोस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. एक बार वो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको मिल गए, एक बार वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपने अच्छे से याद रखे, तो फिर इस टाइप का कौन सा भी क्वेश्चन है आप इजीली कर पाओगे, राइट? थोड़ा सा इसी का डिफिकल्टी
बढ़ाने के लिए वो क्या करते हैं, इस टाइप का कुछ क्वेश्चन देते हैं। मतलब कोई एक ही रेशो आपको गिवन रहेगा, बेस्ड ऑन दैट सबसे पहले आपको राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना है। उस केस में जो भी थर्ड साइड अननोन रहेगी, पाइथागोरस का यूज करके आपको सॉल्व करना है। एंड उसके बाद अगेन जो भी रिक्वायर्ड आपको रेशियोज पूछे गए हैं उसके लिए ये पुट करोगे, राइट। सो दिस इज ऑल फॉर अवर फर्स्ट मॉड्यूल। If you have any doubt, then you can ask anything. Okay. Now we'll just go back to the next one जो आपने फर्स्ट में किया था। ये जो भी हम देख रहे थे, जितने भी आपने किया है, याद करो एक बार। साइन के लिए आप क्या कंसीडर करने वाले थे? साइन इज नथिंग बट अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन इज नथिंग बट अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट। सिमिलरली नेक्स्ट आपका रहेगा फिर कॉस के लिए। साइन के लिए जैसे आपने अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज किया, कॉस के लिए आप एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज ऐसे कंसीडर करोगे। tan is nothing but opposite upon adjacent, correct। So here we have the next question। अगर ये क्वेश्चन आप कर पाए, then we'll directly go for the next type of question। Just try to do it। See, we have given that sin a as a 3 upon 4, then calculate cos a and tan। अगेन sin a के बारे में दिया है, आप कुछ ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करोगे। तो sin a given था 3 upon 4, but we know that if we are talking about this triangle, sin a is nothing but O upon H, that is opposite side upon hypotenuse one। So we can write this as a BC upon H will be 3 upon 4। So again same टाइप जैसे आपने किया है, चेक मल्टीपल आप के कंसीडर करोगे, 10 से BC 3 के बन गया, तो फिर इससे आपका बन जाएगा 4 के इजीली। फिर आप ए बी के बारे में बोल सकते हो। देखो ये आपका 4 है, ये आपका 3 है। सो AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, बट AB की वैल्यू तो अननोन है। तो 16 के स्क्वायर minus 9 के square will be AB square, which is nothing but AB square can be written as 7 times K square। बट ये बन गया आपका AB square का वैल्यू, आपको चाहिए क्या? AB। So we'll just consider square root of it। 7 आपका perfect square नहीं है, इसके लिए आप ये root 7 as it is consider करोगे। एक बार तीनों भी साइड आपको मिल जाते हैं, आगे का सब आप कर सकते हो, राइट। cos is nothing but adjacent upon hypotenuse, so it will be AB upon AC, root 7 k upon 4 k, so that k will get cancelled and cos A will be root 7 upon 4। Similarly, tan A क्या मिलेगा आपको? tan is nothing but opposite upon adjacent, that is BC upon AC, so it will be 3 upon root 7। आई होप आपको अभी इस टाइप के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए, राइट। कर सकते हो आप, ये क्लियर हो गए सारे। You have the next question like this। हाँ, जैसे आपने पहले पे किया था उतना ही आपको कंसीडर करना है। सबसे पहले उन्होंने कुछ आपको कॉट थीटा दिया था, तो ओनली केस इज दैट आपको अभी इवेल्युएट करना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। So here we have a right angle triangle। आपको थीटा के बारे में बोला है, but we know that cot theta given है आपका 7 upon it, but we know that cot is nothing but adjacent upon opposite, A upon O, right। So AB upon BC बन जाएगा आपका 7 upon A। ये तो अभी बहुत बार हमने किया है, राइट। सिमिलर दिस आप कुछ के ऐसा प्रोपोर्शनल कांस्टेंट कंसीडर करोगे, सो दैट यू कैन राइट AB will be 7k and BC will be 8। बट इस राइट एंगल ट्रायंगल के दो साइड्स आपको पता है, हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है, कैसे करोगे? पाइथागोरस थ्योरम का यूज करोगे। AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, व्हिच इज नथिंग बट C स्क्वायर विल बी 49 टाइम्स K स्क्वायर प्लस 64 टाइम्स K स्क्वायर। देखो बच्चों को डाउट इधर आता है कई बार, क्या करें अगर वो वाला केस आपको परफेक्ट स्क्वायर नहीं मिलता है। पिछले वाले क्वेश्चन में भी हमने रूट 7 एज इट इज कंसीडर किया था,
अगर आप ये सिंप्लीफाई कर सकते हो, मतलब फैक्टर्स ऑफ परफेक्ट स्क्वायर इनटू समथिंग लिख सकते हो तो फिर ठीक है, अदरवाइज जो नंबर आपको मिल रहा है आपको एज इट इज कंसीडर करना। देन आफ्टर दिस, तो ये बन जाएगा आपका AC का वैल्यू, सो विल जस्ट राइट इट हियर। एक बार ट्रायंगल के तीनों भी साइड्स आपको समझ में आ गए, उसके बाद सिर्फ आपको क्या करना है, साइन थीटा एंड कॉस थीटा फाइंड आउट करना है। बट साइन थीटा के लिए आपने याद क्या रखा है, देखो साइन थीटा इज नथिंग बट अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज OH, तो थीटा के लिए अपोजिट रहेगा BC, hypotenuse रहेगा AC, hence we can write sin theta as a, जो proportional constant आपका रहेगा कैंसिल हो जाएगा, and sin theta will be 8 upon root 113. Okay, similarly can you do for cos, अभी तो बचेगा, जैसे sin के लिए आपने OH याद रखा है, वैसे ही cos के लिए आप AH याद रखोगे, that is adjacent side upon hypotenuse. So we can write cos theta as adjacent is nothing but 7k divided by hypotenuse. So cos theta will be k will get cancelled. Hence cos theta will be 7 upon root 113. ये थे given cases. Okay. So अभी आपको find out करना है value for the whole thing. That is सिर्फ you have to put the values of sin theta and cos theta only. Correct? समझ में आ रही है? पहले से ने क्या किया, जो भी आपने पहले सारे क्वेश्चन देखे थे उस सब में हम सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तक आ रहे थे। आगे वाले केसेस में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो भी कुछ आपको वैल्यूज मिलती है वो ऑन दिस आपको कुछ वैल्यू फाइंड आउट करनी। So we have to evaluate this one. We'll just take it on the LHS. So 1 plus sin theta is nothing but this is same as 1a plus b into a minus b. A plus b into a minus b. आपका आंसर क्या रहता है? A square minus b square, right? A plus b, a minus b. So this will be a square minus b square, which is nothing but 1 square minus sin square, divided by 1 plus cos theta into 1 minus cos theta will be 1 minus cos square theta. A plus b into a minus b. Hence the answer will be 1 minus cos square theta. So the next case is that अभी आपके पास ये जो sin theta and cos theta के values है, ये बस आपको करने हैं इसमें put. So we can write this as 1 minus sin square theta. Sin theta आपके पास था 8 upon root 113. करेक्ट? समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? तो फिर sin square theta is nothing but we'll just put this value here. So if sin theta is 8 upon root 113, then sin square will be 8 square upon root squaring this, ये मिल जाएगा, right? Divided by 1 minus cos square theta. So 1 minus cos theta की value will be 7 upon root 113. Hence, we can write this as a 1 will be as it is 8 upon square root of 113 whole bracket square, which is same as 8 square divided by root square. So root will get cancelled with 2. Hence, this will be 8 square is 64 upon 113 divided by 1 minus 7 square will be 49 and square root of 113 whole bracket square. So that square root sign will get cancelled and this will value for denominator. Hence 1 minus 64 upon 113 divided by this. You just have to simplify this one. There is a 1. So अगर आप denominator सबसे पहले consider करोगे, then the first bracket will give us value as 113 minus 64 divided by 113, right? Divided by same, इसके लिए अगर consider करोगे तो 113 minus 49 divided by 113. Okay. So what will be the case of 113 minus 64? Its answer is 49. 49 upon 113 divided by this. But we know that division is nothing but multiplication of the inverse one. Hence, its answer will be 113 divided by 64. Right?
क्या किया हमने, जो भी सेकेंड ब्रैकेट आपके पास था डिवाइडेड बाय ए अपॉन बी, इट्स सेम एज इनटू बी अपॉन ए, इसका रेसिप्रोकल कंसीडर करना, इनटू चेक करो. So 113 will get cancelled with this. Hence, our answer will be only 49 upon 64. Obviously, we cannot simplify this one. So ये रहेगा आपका आंसर. This will be the case. If you want to take a screenshot, it's just good for you. Okay. Should we move on for the next one? Same type का है देखो. I think you can do it easily. Cot theta आपको given था. If cot theta is 7 upon 8, then find the value of cot square theta. जैसे आप x square is same as x into x कंसीडर करते हो, वैसे ही cot square is nothing but cot into cot. So cot square theta will be 7 upon 8 full bracket square. The answer will be 49 upon 64. Just go through it. सेम टाइप है जैसा हमने पहले वाला किया था. 3 times cot a is equal to 4 गिवन था. पिछले वाले क्वेश्चन में हमने सिर्फ एलएचएस का एक वैल्यू फाइंड आउट किया था. इस केस में आपको ये ट्रू है कि नहीं चेक करना है. मींस यू हैव सम वैल्यूज इन एलएचएस, यू हैव सम वैल्यूज इन आरएचएस. यू जस्ट हैव टू चेक दैट whether can you reduce the LHS to the RHS. सिर्फ ये आपका पार्ट रहेगा. But first part तो सेम ही है. 3 times cot A is equal to 4. So we'll just consider one of the right angle triangle, which is right angle at B. Given case is 3 times cot A is 4. So we can write this as cot A will be 4 upon 3, right? But आपको क्या पता है, cot is nothing but A upon O, which is nothing but adjacent side divided by opposite side. So we can write this as from equation 1 and 2, 4 upon 3 it's same as AB upon BC. So the rest part easily आप कर सकते हो, right? कौन सा वाला यूज करोगे? You will just have to consider a proportional constant. Hence we can say that AB will be 4K and BC will be 3K. AB will be 4K, BC will be 3K. So now we have a right angle triangle in which two sides are known to us. Third one सिर्फ आपको find out करना है. जिसके लिए आप Pythagoras theorem यूज करोगे and ये easily find out कर सकते हो. अगर आपको Pythagoras triplet के बारे में पता है, which is nothing but 3, 4, 5, तो easily directly आप ये लिख भी सकते हो that AC will be 5K. The only case is that आपको as a reason लिखना है. We know that 3 dash 4 dash 5 is a Pythagoras triplet. So up to this आपने क्या फाइंड आउट किया, जितने भी कुछ आपके पास साइड से ट्रायंगल के तीनों सबका आंसर आपको मिला. सो द नेक्स्ट पार्ट, गिवन पार्ट क्या है, देखो जो भी कुछ आपको क्वेश्चन में मिल रहा है इट इज जस्ट इन टर्म्स ऑफ साइन, cos and tan. So for that, first of all we'll just find out what will be the value for sin. Sin A is nothing but O upon H, that is 3K upon 5K. But we have to consider sin square. First सिर्फ sin A क्या रहेगा, देखो sin is nothing but O upon H, that is BC upon AC. Hence sin A will be 3K upon 5K, that KK will get cancelled and sin A will be 3 upon 5. Okay. देखो ये सिर्फ साइन ए का वैल्यू, बट क्वेश्चन में जो पूछा गया था वो साइन स्क्वायर है, वो बाद में कंसीडर करेंगे. नेक्स्ट वन इज cos ए, बट cos is nothing but AH, that is adjacent upon hypotenuse. So if you have to consider the value for cos A, we know that adjacent side is nothing but AB, hypotenuse is nothing but AC. So we just have to put 4K upon 5K, that KK will get cancelled and you will get cos A as a 4 upon 5. जो भी quite question था, I can see there was some term in sin and cos A. The only remaining term is tan. So we'll just find out what will be the value for tan A. But tan A is nothing but opposite upon adjacent, O upon A, right? So tan A
will be BC upon AB. BC upon AB. But BC is nothing but 3K, AB is nothing but 4K. So वो proportional constant हो जाएगा cancel and you will get tan A as a 3 upon 4 only. Now we have the values for sin, cos and tan. जो भी required part आपको check करना था, we'll just go through it. First of all, we'll just consider LHS. LHS is given as 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A, right? But we know the value of tan A is 3 upon 4. So what will be value of tan square, which is nothing but 3 upon 4 whole bracket square, divided by 1 plus tan square. So 1 plus 3 upon 4 whole bracket square. Sorry. But 3 upon 4 whole bracket square is nothing but 9 upon 16. In the first term, you will get 1 minus 9 upon 16. And for the second bracket, we have to consider divided by 1 plus 9 upon 16. So simplifying this, you will get 16 minus 9 upon 16 divided by 16 plus 9 upon 16. Right? So after simplifying this, you will get the value for first term is 7 upon 16 divided by 25 upon 16. But again, we know that division is nothing but multiplication of inverse. So we can take this as a 7 upon 16 into 16 upon 25. So that 16 will get cancelled and the single value for LHS जो भी कुछ बड़ा वाला आपको मिल रहा था 1 minus tan square upon 1 plus tan square, it will be 17 upon 20. Sorry, 7 upon 20. Now, what will you do? Just start with the RHS. अगर RHS की भी value आपको 7 upon 25 मिलती है, then we can say that the given statement is the correct one. So we'll just start with the RHS. RHS is nothing but cos square A minus sin square A. Cos square A minus sin square A. But cos is nothing but 4 upon 5. So we'll just consider 4 upon 5 whole bracket square minus sin was 3 upon 5. So sin square will be 3 upon 5 whole bracket square. So in all, the total answer will be 16 upon 25 minus 9 upon 25. So 16 minus 9 will give us answer as a 7 upon 25, which is same as the LHS, right? As LHS equals to RHS. Hence, we have verified the given statement. Hence, we have verified the given statement. Okay. So we just go through the next one. I think आगे वाला आप कर पाओगे अभी, ठीक है? हम सिर्फ डिस्कस करेंगे. The rest thing you can do. So you have the given value for tan A and we know that tan is nothing but tan के लिए आपने क्या याद रखा है? O upon A. That is अगर tan A के बारे में बोल रहे हैं तो फिर BC upon AB की वैल्यू आपको गिवन थी. What is the given part? Tan A is 1 upon root 3. But we know that trigonometric ratio for tan A is given as opposite upon adjacent. That is BC upon AC. So from 1 and 2, you can say that BC upon AB will be 1 upon root 3. So just consider a proportional constant so that you will get AB as a root 3 and BC as a K. Hence, AC square will be AB square plus BC square. But जो आपको मिला है 3K square plus K square. So AC will be 4K square. अगर सिर्फ AC find out करना है तो आपको just positive square root consider करना है. Hence, its value will be twice K. एक बार अगर ये मिल जाए तो फिर आई थिंक आगे वाला सब कुछ आप कर सकते हो. देखो जो भी केसेस है तो ऑल द टर्म्स गिवन एज sin A cos A cos C sin C. So before that just try to find out what are the values of sin A. Sin A is given as BC upon AC, which is nothing but K upon 2K. So that KK will get cancelled and sin A will be 1 upon. Similarly cos C के बारे में देखते हैं.
cos is nothing but adjacent upon hypotenuse. So it will be k upon 2k. Hence cos c will be 1 upon 2. Cos A is nothing but adjacent upon hypotenuse. So for A, what will be the adjacent one? Which is nothing but root 3k, which is AB. AB upon AC. ठीक है? Then up to this. So cos A will be root 3 upon 2. So the only remaining part is sin C. Sin C will be AB upon AC, which will be root 3k upon 2k. So that k will get cancelled and answer will be only root 3 times 2. So ये बन गया आपके 4 plus जो required बनते directly solution के लिए consider करो. First part कुछ है आपका sin A cos C. So first bracket will be 1/2 into 1/2 plus cos A is root 3 upon 2 into root 3 upon 2. ठीक है? Which is same as 1 plus 3 upon 4, which will be 4 upon 4. Hence, sin A cos C plus cos A sin C will be 1. The answer will be 1. Done up to this? समझ में आ गया ये? Similarly, next part जो रहेगा, you can do it as a homework. सेकेंड वाला आप ऐसे मूव कर सकते हो, राइट? आपको सिर्फ cos A cos C माइनस sin A sin C की वैल्यू पुट करनी है, जो आप इजीली कर पाओगे. So we'll just check through the next type of question, which is okay. We have this question. In triangle PQR, right angled at Q, PR plus QR is given as a 25. PQ is given as a 5 centimeter. Then determine the value of sin P, cos P, tan P. Whatever is your exercise 8.1, this is just related to आपको अगर triangle value पता नहीं है, just try to find out what will be the third term and just go through the all other ratio. But the given part was PR plus QR is given as a 25 and PQ is given to us. It means that थोड़ा सा इस type का question सिर्फ आपका रहेगा ये जो आप easily Pythagoras से solve कर सकते. So what was the given part? PR plus QR is equal to 25. PR plus QR is 25 and PQ is given as a 5 centimeter. So just consider QR as a x. So we can write PR as a 25 minus x. Right? ये समझ में आ रहा है? ये तो given part था. QR plus PR आपको 25 दिया था. We'll just consider QR as a x so that PR will be 25 minus x. So applying Pythagoras theorem to it, we can say that PR square equals to PQ square plus QR square. PR square equals to PQ square plus QR square. But ये कुछ मिल रहा है आपको A minus B bracket square के फॉर्म में, and you know that what is the formula for A minus B whole bracket square? A square minus twice AB plus B square. So 25 square minus 2 times 25 into 1, which is nothing but minus 50 times x plus b square, that is x square, equals to pi square will be 25 and x square will be as it is. So we can cancel x square, the both side, remaining term will be minus 50x equals to 25 minus 625. Hence, value of x will be minus 600 divided by minus 50. 0, 0 will get cancelled. 5 1 5 12 So you will get x as a 12.
अगर x का वैल्यू आपको मिला है मतलब QR का वैल्यू आपको मिला है, QR का वैल्यू आपके पास है तो आप PR इजीली फाइंड आउट कर सकते हो which is nothing but 25 minus 6, hence PR will be 30 centimeter. Okay, so the tough part was only that कि सिर्फ आपको ये समझ में आना चाहिए जो हमने पहले वाले क्वेश्चन देखे थे डायरेक्टली आपको रेशियो ये थे, इस केस में थोड़ा सा अलग था बट जो इजीली आप कर सकते हैं, राइट? समझ में आ रही है? Hence, you will get PR as a 13 centimeter. So, for this triangle PQR, now we have those three ones, 5 centimeter, 12 centimeter and 13 centimeter. So, sin P, cos P and tan P. आप easily कर पाओगे. Sin P is nothing but opposite upon hypotenuse. Cos P is nothing but adjacent upon hypotenuse. And tan P will be opposite upon adjacent, which will be 12 upon 5. So this is all for this question. QR upon PQ will be 12 upon 5. So the similar way you can solve for this question. Just रेशियो के अलावा आपको जो भी कुछ दिया है वो OQ minus PQ के बारे में लिखना. So OQ minus PQ is given as a 1 centimeter. Again same type से आप कंसीडर कर सकते हो. अगर PQ आप कंसीडर करोगे x, then OQ will be correct 1 minus x. OP is given as a 7. QP will be x, hence QO will be x plus 1. So just going through it, you can easily get the values of QP and QO in terms of this. क्या मिलेगा देखो, पाइथागोरस थ्योरम का आप यूज करोगे, hence OQ square equals to OP square plus PQ square, that is 7 square plus x square, but x plus 1 whole bracket square can be written as x square plus 5x plus 1 equals to 49 plus x square. X square will get cancelled and you will get twice x as a whole digit. Hence value of x will be 25. अगर x आपका रहेगा 25, then OQ आपको consider करना होगा 25 plus 1, which is nothing but 25 cent. ओके, सो ये वाला पार्ट आप इजीली कर पाओगे. जैसे आपको ओ मिल रहा था, PQ is 25, sorry, yes, OQ will be 25 here. So the rest part you can do it on your own. We are just talking about sin Q and cos Q, but we know that sin function is just for opposite upon hypotenuse. Cos is for adjacent upon hypotenuse. So just put this value OP upon OQ. So sin Q will be 7 upon 25 and cos Q is nothing but adjacent upon hypotenuse. It will be 24 upon 25. ठीक है?